this is a decision by FIFA, not by God, we should vacate the PFF house, and even if Pakistan gets banned, we don't care. So it was clearly shown that football isn't something on their agenda. FIFA, as they say, was keen to give Harun Malik carte blanche. He was going to work on resolving the problem as grassroots, which means he wanted to apply technology to club scrutiny. He wanted to make sure the voter lists were up to scratch. It would have taken him longer than, of course, the 6 months. Unka jo mandated extension thi, that was till June. But again, from insider reports, we know that FIFA wanted to extend that mandate and wanted to resolve the issue. When this went on, local parties, जिसमें शाहरुख हुसैन शाह थे और बाकी भी कुछ और लोग थे, जो इनका एक ग्रुप है पूरा, they started saying that they want the normalization committee to only focus on the election, get it done with as soon as possible. And ultimately, जब ये 2-3 महीने चलते गए, it got to a point where they just went up and then took over the PFF house. And as per reports जो चीजें सुनने की मिलती है, it looks more like a power play, because जब इलेक्शंस होने हैं, ज्यादा देर लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, स्क्रूटनी होगा, तो the results might not be in their favor. When you're banned, you're not a FIFA member, which means that the Pakistan national team at any age group cannot take part in any competition or play any friendly matches. अभी पाकिस्तान ने सैफ चैंपियनशिप में साल हिस्सा लेना था, उसकी ट्रेनिंग की तैयारी हो रही थी. द टीम वाज सपोज्ड टू प्ले फ्रेंडली मैचेस. आपकी वुमेन्स टीम ने एशियन कप के क्वालिफायर्स खेलना था. यूथ लेवल कॉम्पिटिशन्स थे खवातीन के. ये सारी चीजें गो आउट ऑफ द पार्क, क्योंकि बेशक अशफाक साहब लोगों का ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर सकता है पीएफएफ हाउस में बैठ के सारा कुछ, बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड. दे कैन नॉट फील्ड ए पाकिस्तान टीम एट एनी लेवल. ना वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली कहीं खिला सकते हैं. एंड सेकंड ये है कि एनी कंपटीशन, इवन इफ दे ऑर्गेनाइज इट लोकली, दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा. तो वो एक ऑफिशियल कंपटीशन नहीं होगा. प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स नहीं माने जाएंगे, प्लेयर्स जो गोल्स करेंगे वो नहीं माना जाएंगे. एंड दिस एंटायर सिचुएशन, आप जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है, which has already suffered in the last few years, वो और भी ज्यादा सफर कर रही है, because everybody is wondering what's wrong with Pakistan over the last few years, कि ये अपने मसले ही नहीं सॉल्व करने पा रहे. Fahmida Mirza has officially condemned the incident. She has said that this should not happen, but the government can play a far more important role, क्योंकि ये मसला local है. It's not something that FIFA can resolve. जब आपकी गवर्नमेंट should have taken a very clear stance, and they still can, मतलब if they are able to do it tomorrow, perhaps a day after that, it can come to a point where FIFA can be then talked to resolve the issue. The government needs to be very clear कि देखें, if you are not the recognized body, FIFA recognizes the normalization committee, and they are the official holders as per FIFA, and जब वो elections कराएंगे, then the other party comes in, whoever gets elected. And because football is a neglected sport, the government has played no role whatsoever over the last 70 years to promote it at any level. Everything that has been done, to be honest, has been done through FIFA's finances. If FIFA did not have a funding program, so Pakistani football would stand literally nowhere, because the cost of running football is very expensive, and without FIFA's finances, it would be impossible. जो ये PFF house पे भी कब्जा करके बैठे हुए हैं, that was funded by FIFA itself. What people don't realize is that football is definitively the number 2 sport in Pakistan, and the most interesting part is if you look at the facts. आपकी जो फुटबॉल की फॉलोइंग है पाकिस्तान में, 2006 में पाकिस्तान में एक बिग काउंट कराया था फीफा ने, एंड दैट बिग काउंट टर्न्ड अप अ नंबर ऑफ नियरली 2.9 मिलियन प्लेयर्स. तो फीफा के मुताबिक आपके पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख प्लेयर्स हैं. और interestingly, that number put you into top 20 countries of the world when it came to number of football players. So that is down to your population, but you have more football players than Germany. So it's not a case कि आपके पास प्लेयर या टैलेंट पूल मौजूद नहीं है. It's a case of what the system does. 2014 का जो वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप, पाकिस्तान में तकरीबन 14 मिलियन लोगों ने देखा था, and that made you Asia's 8th largest market for the World Cup. और 5 मुल्क तो वैसे ही एशिया से खेल रहे होते हैं. तो आपकी फुटबॉल की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है पाकिस्तान में, and this is without having Pakistan perform at any significant level
in the world. और उसको ट्रांसलेट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए एज अ कंट्री, एज अ सिस्टम इनटू अ विनिंग टीम, एज अ टीम दैट परफॉर्म्स वेल. देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया इन सर्कमस्टांसेस फार वर्स देन अस. अफगानिस्तान वॉर ऑन कंट्री, सैफ चैंपियनशिप 2013 में जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में इस वक्त काफी आगे गए, इंडिया से भी आगे हैं इस वक्त. Philippines, a country ranked over 170 in 2006, is now played the Asian Cup last year. तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया उस टाइम to run the FIFA house. Consequently, that became the first basis for banning Pakistan, as FIFA saw that as interference in the running of the Pakistan Football Federation. So FIFA के अपने का एक constitution है, PFF का भी constitution है, and any direct intervention by authorities from Pakistan is deemed a violation of that constitution. And that is basically what happened here. And ये October 2017 में जाके Pakistan was banned by FIFA for the first time. अशफाक शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट के एक मैंडेट के इलेक्शन कराया गया और उनको प्रेसिडेंसी ऑफ पीएफएफ दी गई. बट जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम था कि दैट इलेक्शन वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा. तो जब ये इलेक्शन हुआ भी तो फीफा recognize only the Faisal Salehat led body, and उसकी वजह से कि बहुत बड़ा मसला बन गया, because जब FIFA recognition का मतलब है कि that party or that federation in that self is the only one that is globally recognized, और वो पाकिस्तान को इन एक्चुअलिटी रिप्रेजेंट कर सकती है. और 2019 में यहाँ तक प्रॉब्लम आई कि देयर वर टू टीम्स मेड, नेशनल टीम्स, जो एक यहाँ पे ट्रेन कर रही थी, एंड क्योंकि फैसल सालियात वाज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ही वाज एबल टू फील्ड अ टीम जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में खेली उस जमाने में इन जून 2019, और कंबोडिया के अगेंस्ट दे एंडेड अप लूजिंग क्योंकि इतनी हैपहैजर्ड प्रिपरेशन थी और सारा कुछ चल रहा था. सो अ नॉर्मलाइजेशन कमेटी इज द लास्ट स्टैंड फीफा टेक्स टू रिजॉल्व अ मेस लाइक दिस. वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी भेजते हैं और आसान अल्फाजों में ये कहते हैं कि आप सारे हट जाएं. We will take charge of the normalization committee, will take charge of the PFF. They will run the daily affairs, and then they will hold free and fair elections, and whoever comes into power is then considered and recognized by FIFA as well.